Hello everyone. Today we are going to talk about the entire application process for IIM Kozhikode's BMS program. Yes, Bachelor's of Management Studies program, which is offered at IIM Kozhikode campus. They have released their forms and the application process has started. And यहाँ पे एक छोटी सी डिफरेंट चीज है. बेसिकली IIM Kozhikode BMS एडमिशंस के लिए आपको एक अलग से एग्जाम देना पड़ेगा, विच इज IIM Kozhikode's like a separate aptitude test, BMS 80 उसका नाम दिया गया है. एंड एग्जाम तक तो हम बाद में पहुंचेंगे, बट एग्जाम से पहले हमें ये फॉर्म फिलिंग प्रोसेस कंप्लीट करना है, पूरा का पूरा फॉर्म फिल करना है. एंड ये फॉर्म इतना इजी, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है जैसा IIM इंदौर का फॉर्म फिल किया था हमने, IIM रोहतक का फॉर्म फिल किया है, जिपमैट का फॉर्म फिल किया है. यस, ये इतना इजी फॉर्म नहीं है, बिकॉज अदर देन some basic details that we have been filling in almost every application process. यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी फिल करनी है. ओके, नाउ स्टार्टिंग बहुत ही नॉर्मल है. आपको क्या करना है, गूगल पे IIM Kozhikode BMS प्रोग्राम टाइप करना है एंड जो भी IIM Kozhikode का ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आएगा उस पर क्लिक करना है एंड इट विल टेक यू टू द ऑफिशियल वेबसाइट of IIM Kozhikode, wherein you will see Bachelor's of Management Studies एडमिशन अप्लाई ऑनलाइन. सो अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करो. क्लिक करते के साथ ही ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा रजिस्ट्रेशन पेज पे. सो डायरेक्टली हम फॉर्म फिलिंग प्रोसीजर स्टार्ट नहीं कर सकते. ऑब्वियसली जैसे हमने और एग्जाम्स के लिए रजिस्टर करवाया था, विल हैव टू फिल इन some of our personal details, the contact information, the email ID, ये सारी चीजें fill in यहाँ पे करनी है and registration complete होगा and then we'll be logging in and then we'll be filling the other details which are required here. All right. Now, this is the registration process. So if you are already registered, you can log in here. But since we are applying here for the first time, we'll have to do the registration. Okay. Registration, you'll have to put in your name, your date of birth, your email address. You'll have to retype the same email address in this confirm email address. Then you'll have to select your country, then your mobile number. country जैसे ही हम इंडिया सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे मोबाइल नंबर का जो कंट्री कोड है 91 वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा. सो इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. Then write your mobile number which you have been using for all the communication, right? So मोबाइल नंबर डालिए, उसको कंफर्म कीजिए and generate OTP. Now it will generate two different OTPs. First of all, to confirm your mobile number, ठीक है, मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, वो डालेंगे and then एक email address पे OTP आएगा. So you'll have to put in both the two OTPs separately for this, right? Now OTP generate पे क्लिक करेंगे, then यहाँ पे हमें OTP fill करने होंगे. 2 OTP आप fill करेंगे, then declaration I agree पे क्लिक करेंगे. ये जो भी नंबर्स हैं, कैप्चा है, इसको फिल इन करेंगे एंड आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा. एज सून एज यू फिनिश दिस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, यू विल रिसीव योर लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड डिटेल्स. ऑलराइट, लॉगिन आईडी पासवर्ड डिटेल्स जैसे ही आपको मिल जाती हैं, देन यू कैन क्लिक लॉगिन हियर एंड इट विल टेक यू टू द लॉगिन पेज. यहाँ पे अपना यूजर आईडी डालिए, अपना पासवर्ड डालिए, कैप्चा डालिए एंड लॉगिन पे क्लिक कीजिए. राइट, so now it will take you to the login page wherein you will have to start your entire form filling process, right? So कुछ portions मैंने यहाँ पे already fill करके रखे हुए हैं. I'll quickly continue from there. So these are the different tabs that we'll have to fill in: personal details, academic details, extracurricular activities. Yes, we'll have to fill in these things as well. Then personal statement, basically it is statement of purpose. Why do we want to take admission in the BMS program? So I'll take you to each and every step one by one. ठीक है, तो चलिए पहले पर्सनल डिटेल्स में देख लेते हैं क्या क्या फिल करना है. यहाँ पे आज सच कुछ बहुत डिफिकल्ट चीजें नहीं है, सब कुछ वेरी लाइक एवरीथिंग इज वेरी सिंपल. आपको फोटो अपलोड करना है, आपको सिग्नेचर अपलोड करना है, दैट्स इट. ओके, सो लेट्स डू दैट. सो यू कैन फिल इन योर नेम. मैंने यहाँ पे पहले ही फिल कर रखे हैं सारी चीजें. तो नेम, कैंडिडेट्स फर्स्ट नेम, योर मिडिल नेम, योर लास्ट नेम,
your father's name and your mother's name, right? You can fill in all these details. Then they'll talk about your personal details, your date of birth जो आप already fill कर चुके होगे, ये automatically fill in आ जाएगी, your gender, nationality and the category, right? Now if you belong to any of the reserved categories, you can select the appropriate choice from the drop down menu. आगे चलते हैं. Do you belong to person with disabilities, PWD category को belong करते हो? Select yes, otherwise you can select no. Okay, then they'll ask your communication address, so you can fill in all the necessary details related to your communication address. So address line 1 is mandatory, 2 3 are not mandatory. Select your country, select your state, select your district and so on so forth, whichever is applicable. Then pin code, your email ID, right, your primary email ID. Alternate email address, it's totally your wish. If you want to fill in any alternate email address, you can do that, otherwise you can leave it blank. This is not a mandatory field. Then primary mobile number, यहाँ पे मैंने fill in कर दिया है. अब इसके बाद पूछ रहे हैं, is permanent address same as the correspondence address? So if it is same, you can select yes. If it is not same, you can select no. अगर आप no select करते हो, then they'll ask you to fill in your एड्रेस एज वेल. जो भी आपका कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस है वो फिल इन करने के लिए बोलेंगे, राइट? सो मेरे केस में मैंने येस सेलेक्ट किया है, बोथ आर सेम. यू कैन मूव अहेड. देन they'll ask for emergency contact details. You can provide the mobile number of your parents, of your siblings, जो भी है. एक और मोबाइल नंबर यहाँ पे देना है एंड दिस इज मैंडेटरी. योर रिलेशनशिप विद लाइक जिसका भी आपने नंबर दिया है, लेट्स से आपने अपने फादर का नंबर दिया है, सो रिलेशनशिप विद कैंडिडेट, आपसे क्या रिलेशनशिप है उनकी. सो यू कैन फिल इन फादर. आपने मदर का नंबर दिया है, यहाँ पे मदर लिख सकते हैं, ठीक है. नाउ यू विल हैव टू अपलोड द डॉक्यूमेंट्स. नाउ वेरी नॉर्मल वे in which you will have to upload documents. You can check for the photo specifications and the sample photographs. But जो आपने IPMAT इंदौर में, IPMAT रोहतक, जो नॉर्मल फॉर्म फिलिंग में आपने फोटोग्राफ यूज की है, सेम फोटो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं. लेट्स talk about the size of the photograph. So they are saying that please upload your photograph maximum 1 MB, minimum की कोई लिमिट नहीं है. एंड फॉर्मेट क्या होना चाहिए, JPEG और JPG फॉर्मेट. सो PDF फॉर्मेट में नहीं चलेगी, राइट? सो यू कैन अपलोड इट हियर. डन. देन प्लीज अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ द सिग्नेचर. सिग्नेचर के लिए मिनिमम साइज का लिमिट है. तो प्लीज अपलोड योर सिग्नेचर मैक्सिमम 80 KB ओनली. JPG and JPG formats are allowed. बट जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक here to upload, यहाँ पे मिनिमम साइज का लिमिट है. मिनिमम साइज 10 KB होना चाहिए, राइट? सो 10 KB से 80 KB तक का साइज ऑफ फाइल इज अलाउड. सिमिलरली यहाँ पे भी इधर फोटोग्राफ में आर देयर एनी स्पेसिफिकेशंस अबाउट द मिनिमम साइज? So yes, minimum 50 KB and maximum 1 MB the size is allowed. All right, मैंने already upload कर दिया है. I'll save it and we'll move on to the next one. Now before you move on to the next, they are asking you to view your photograph. तो view पे click करो, photograph अपनी view कर लो, ठीक है, and signature भी view कर लो, and then you are good to go ahead to the next step, which is the details about your academics. Okay. All right. Now for academics, let's see क्या क्या डिटेल्स मांगी हैं यहाँ पे. तो ऑब्वियसली 10th के मार्क्स मांगेंगे, 12th के मार्क्स मांगेंगे. यहाँ पे ये आपने अगर कुछ एक्स्ट्रा आपकी कोई क्वालिफिकेशन है उसकी भी डिटेल्स के लिए ऑप्शन दिया है. So obviously the qualifying exam that will be writing for the admissions will be IIMK BMS 80 2026, BMS aptitude test 2026, right? Now the first set of details that we'll have to fill is our SSC or 10th or equivalent details. So first is the name of the board. So Central Board of Secondary Education. अगर आपका कोई state board है, so you can select that board as well. They are not asking the name of the school. Month and year of completion. So whichever month and year you have completed your 10th standard, आप वो वाला month and year select कर सकते हैं. Now moving ahead, maximum marks, right? So let's say आपके 5 subjects थे, हर एक subject maximum marks 100 marks का था.
So 5 into 100, it will become 500. Very simple thing. And then the marks that you have obtained and your percentage. You will have to type in all these things, right? So 500 marks was the maximum marks. 400 is what I obtained. And this is 80 percentage. So 400 is 80 percentage. Sorry. Yes, 400 is 80 percentage of 500. So apna percentage calculate karo and put it here. Okay. Next, they'll ask you, have you completed your HSC or 12th or equivalent or diploma course? तो अगर आपने complete कर लिया है 12th last year और उससे पहले जब भी आपने complete किया है, so you may select yes. Those who will be appearing for board examinations, इनका result नहीं आया है अभी, तो आप यहाँ पे no लिख दीजिए that you have not completed. If you'll write that you have completed, they'll ask you to fill in these details, right? So again, 12th course type, 12th equivalent or diploma, maximum marks, marks obtained, aggregate percentage, you'll have to fill in each and everything, right? As usual. Then the next is about the other academic qualifications. Okay. So other academic qualifications, let's say I'll select yes. So if you have already started with bachelor's degree or completed any bachelor's degree, are you in the final year of bachelor's degree? Yes or no? Have you completed bachelor's degree? So you can fill in the details about your bachelor's degree अगर आप कहीं से pursue कर रहे हो या फिर कर चुके हो. Okay, I have selected no. Then they are asking about the other professional qualifications. Professional qualifications as in chartered accountancy, CA, ICWA, and so on and so forth. So are you a fellow of Institute of Actuaries of India, FIAI? Do you want to enter any professional qualifications such as CA, CS, ICWA, and so on and so forth? Right? So yes, if you have any such qualifications, definitely fill in those information. Otherwise, you can select no. Okay? So I have selected no, save and next. Now, the next part is the extracurricular activities. So let's see what all things will have to fill in extracurricular activities, what all different options, columns are there. Okay. So let's say you have done any kind of leadership role, you have involvement in that kind of thing. In your school, you have participated, if you have taken any kind of initiative, which has कुछ भी leadership skills आपने अपनी show किया है, तो select करो यहाँ पे and you can write in some details, some specific details about the leadership role in maximum 500 characters, right? If you don't have any kind of thing, don't select this. Now, after this, the next thing is sports. So if you have any kind of representation at any level, at inter-school, inter-college, zonal, national, right? किसी भी level पे आपने sports में participate किया है, which is worth mentioning here, which you feel that you have done something good, you have achieved something. So sports का column select करो and write in the details about that, right? Then list any sport you are involved in, position played and achievements. So यहाँ पे complete वो चीज पूछी हुई है. So they have given you the details क्या क्या चीजें fill कर सकते हैं. Then any clubs or societies if you are a part of. स्कूल में होता है ना हमारे कुछ अलग अलग क्लब्स होते हैं, राइट? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड कोई क्लब है, सोसाइटी है, वहां पे हमने कुछ पार्टिसिपेशन किया है. MUNs होते हैं स्कूल में, वहां पे अगर हमारा पार्टिसिपेशन है, हमने अपने स्कूल को रिप्रेजेंट किया एंड वी हैव वन सम scholarships or some awards, so you can mention such things here. Okay, next thing is voluntary work or community service or social service. So if you are involved, you have certificate, then go ahead, select this and write the necessary details about that. Okay, right, done. नेक्स्ट चलते हैं. अच्छा, यहाँ पे कोई भी चीज मैंडेटरी नहीं है. ऑब्वियसली ऐसा तो जरूरी नहीं है ना कि हर एक स्टूडेंट के पास इनमें से कोई ना कोई एक चीज होगी. सो दैट्स व्हाई दीज फील्ड्स आर नॉट मैंडेटरी. इफ यू डोंट हैव एनीथिंग, डोंट सेलेक्ट एनीथिंग एंड जस्ट क्विकली मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. नेक्स्ट पार्ट इज योर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस. ये डेफिनेटली मैंडेटरी है. ओके, आपको यहाँ पे फिल करना ही पड़ेगा. सो लेट्स सी व्हाट इज द क्वेश्चन दैट दे हैव आस्क्ड. सो इट इज व्हाई I am interested in IIM Kozhikode BMS program. Okay, write a personal statement of 500 to 600 words explaining your interest in the program, your motivation to pursue the course, and how it aligns with your career aspirations.
Discuss why IIM approach and value resonates with you. So इनका जो क्वेश्चन है सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है. ओके, सो एक एक पार्ट पिक करते रहो. राइट अ पर्सनल स्टेटमेंट एक्सप्लेनिंग, क्या क्या एक्सप्लेन करना है. योर इंटरेस्ट इन द प्रोग्राम, सो बीएमएस आपको क्यों करना है, आपका इंटरेस्ट क्यों जनरेट हुआ है. डन. So it will consume, let's say 100, 150 words. Then your motivation to pursue the course, कहां से motivation आया. How it aligns with your career aspirations. भाई मेरा ultimate aim क्या है, मुझे कहां पहुंचना है. And how this particular course, BMS at IIM Kozhikode, will help you in achieving that goal that you have set for yourself. ये चीज आ जाएगा करियर एस्पिरेशन. डिस्कस व्हाई IIM Kozhikode's अप्रोच एंड वैल्यू रेजोनेट्स विद यू. अब IIM Kozhikode की वैल्यूज क्या है, अप्रोच क्या है, ये कैसे पता चलेगा. तो भाई वेबसाइट पे जाओ, वेबसाइट में प्रोग्राम के बारे में आपको गिवन है, IIM Kozhikode की वैल्यूज के बारे में गिवन है, उनकी अप्रोच के बारे में गिवन है, जो होम पेज होता है वहां से रीड करो. एंड हाउ इट मैचेस रेजोनेट्स विद यू, ये चीजें यहाँ पे डिटेल में फिल करनी है. द एंटायर थिंग शुड बी इन 500 to 600 words. So minimum 500, maximum 600, दोनों लिमिट्स गिवन है. इसी रेंज में रहो, 500 से कम नहीं होना चाहिए, 600 से ज्यादा नहीं होना. ओके, तो दिस इज द फर्स्ट थिंग विच इज मैंडेटरी, स्टार लगा हुआ है यहां पे. नाउ नेक्स्ट इज योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल गोल्स. सो ये जो आपके गोल्स है ना, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे करियर एस्पिरेशंस, करियर गोल्स आपने थोड़ा सा हिंट्स यहाँ पे दिए होंगे. राइट. सो सिमिलर चीज को अलाइन करते हुए आपको यहाँ पे उसको डिटेल में लिखना है. तो डिस्क्राइब योर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म पर्सनल एंड प्रोफेशनल गोल्स. सो पर्सनल से ज्यादा प्रोफेशनल पे कॉन्सेंट्रेट करना. सो लेट्स से परसेंटेज वाइज अगर हम देखेंगे, सो 20, 25, 30% आप थोड़ा सा पर्सनल टच देना, एंड देन मैक्सिमम 70%, 75% प्रोफेशनल टच देने की कोशिश करना. ओके, so you'll have to define both your short term as well as long term goal. Now short term goals क्या होते हैं. Your education, let's say the next 3 years or next 5 years, right? Now once you are done with your graduation and your post graduation, you can include your post graduation as well. अब BMS करेंगे तो maximum students MBA की तरफ भी जाएंगे, right? So the next 3-4 years, 5 years will be taken as short term goals, right? And then a little bit about my career aspirations, let's say 10 years down the line, where I actually want to see myself, किस रोल पे, किस पोजीशन पे, किस डोमेन में आपको काम करना है, तो वो वाली चीजें यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकते हो. एंड दैट विल बी अ लॉन्ग टर्म गोल. ओके, हाउ डज दिस प्रोग्राम फिट इनटू योर जर्नी टू अचीव देम. भैया हमने इनको बता दिया अपने शॉर्ट टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स, बेसिकली लॉन्ग टर्म गोल्स. तो IIM Kozhikode BMS प्रोग्राम कैसे हेल्प करेगा कि मैं वो अपने गोल्स को अचीव कर सकूं. तो ये अलाइनमेंट शो करना जरूरी है. अगेन दिस इज मैंडेटरी, तो आपको फिल करना ही करना है. एंड यहाँ पे कोई वर्ड लिमिट गिवन नहीं है, बट ट्राई टू स्टे समवेयर अराउंड 500 to 600 वर्ड्स. ओके, राइट. अब जब तक यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे, रुकिए कुछ लिख देता हूं मैं. लेट्स सी इफ दे विल अलाउ मी टू गो अहेड. अदरवाइज अब आगे कुछ नहीं बचा है. राइट, डेटा सेव्ड सक्सेसफुली, पर्सनल statement is over. Now the city preference for the admission test. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5, they're asking about the 5 preferences. So drop down menu में देखते हैं. Okay, now friends, moving on to the next thing, that is the city preference for the test and city preference for the personal interview. Now for test, they are giving you 5 options. So if I'll check what all cities do we have, yes, we have plenty of cities here. Okay, so you can select the 5 cities which are nearest to your hometown, right? So I'm doing it randomly, but you can just check the geography and select
whichever 5 cities are nearest to your place. Okay, right? Then next is interview city preference, and for interview city preference, they have given you 6 options. Okay, so again, they have plenty of cities, but here you will see majority of metropolitans are here: Bengaluru, New Delhi, Mumbai, Chennai, Kolkata, Hyderabad, and Kozhikode. Right? So you can select the first preference should be given to the city that is nearest or in which you are living. Okay, and likewise you will have to select 6 preferences here. Okay, then I'll save and click next. And last thing, that is declaration and the payment of the fee. So for me, I'll have to pay 4,250. All right. So this is the complete registration fee, right? And choose your payment mode. I'll select online. There was only one option given: declaration. Enter the CAPTCHA 653267. All right. And I'll submit. Please confirm your application details by using the preview button. Okay, so you must preview. All right, okay. Now I can click submit. Editing of any data field after submission is not possible. If the amount is deducted from your account, but it's not reflected in the application form and it is showing payment fail, then please wait for 48 hours. Normal declaration. And then it will take you to the payment portal where you can finish your payment using any of the payment options which are given, right? So friends, this is the complete form filling procedure for IIM Kozhikode BMS program. हाँ, इसके लिए ध्यान रखो, BMS एप्टीट्यूड टेस्ट एक सेपरेट एप्टीट्यूड टेस्ट है, उसके लिए अपीयर होना पड़ेगा. देन जो सिलेक्शन होगा उसमें BMS एप्टीट्यूड टेस्ट, your 10th percentage, your 12th percentage, your personal interview, and your gender diversity. All these things will be, I would say, will be counted, will be used to give you the final admission. Okay, so friends, all the best. Watch this video before you start filling up the form, and just go ahead. This is a wonderful college, and the program will give you very good returns as far as the investment is concerned. All the best.